Hello friends, how are you? As you can see, today we have topic causative verb. This is one of the important topic of the English grammar, and this is considered to be one of the important topic to be asked in every of the competitive exams like the ACE and another of the exams as well. So without wasting time, let's start. What is causative verb first? When the subject doesn't do the work in the sentence itself, but the object does the work instead of the subject, then the verb which is used to denote that the object is doing here work is the causative verb. Here, there are basically three types of causative verbs here: make, have, and get. So, let's talk about them separately. Now we will see here the use of make. Make as the causative verb is used in the sentence when there is the work being done intentionally और forcefully. अगर कहीं पे भी सेंटेंस में हम देखेंगे कि वहाँ पे अगर काम थोड़ी सी इंटेंशनली कराया जा रहा है या थोड़ी सी ज़बरदस्ती कराया जा रहा है तो वहाँ पे मेक का यूज होता है जनरली. सो यू कैन सी द स्ट्रक्चर ओवर हियर. Subject plus make, any form of the make will be there, maybe make, makes, made or something else, any form of the verb may be used there. Okay, so make का कोई भी फॉर्म यहाँ पे यूज हो सकता है सेंटेंस में, प्लस ऑब्जेक्ट. And if there is use of make in the sentence, you have to just put verb one over there. If there is use of make causative verb, then in the sentence you have to put verb one. दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. क्वेश्चन में यही पूछा रहता है जनरली मेक का यूज करके, और आपको कहेगा कि यू हैव टू पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सपोज यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे वास मान दिया हुआ है हमारा फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो कहेगा आपको कि यहाँ पे बताइए कौन सा फॉर्म होगा. सो सब इन द एग्जाम्पल आई मेड रमेश wash clothes. So I is the subject over here and the verb to of make, that is made, used here. Then Ramesh as the object is here. So you have to put just the first verb, the first form of the verb one over here. If wash is the main verb, you have to put verb one over here. You have to put verb one over here, wash. Okay, in here in this sentence verb one study you have to put here. Then in the third one the clean verb one you have to use here. Okay, so यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स में और क्लियर हो जाएगा. जैसे दिया कि आई मेड रमेश वॉश क्लॉथ्स. ओके, आई मेड रमेश और डट डट आपको दे देगा यहाँ पे आपको डट डट दे देगा और कहेगा कि वाश हमारा मेन वर्ब है, इसका कौन सा फॉर्म यहाँ पे यूज होगा करके दिखाओ. सो यहाँ पे वर्ब वन हमें यूज करना होगा. यहाँ पे भी स्टडी वर्ब दे देगा यहाँ पे बगल में और कहेगा कि इसका कौन सा फॉर्म इसमें यूज होगा वो करके दिखाओ. सो वर्ब वन. जहाँ पे भी अगर सेंटेंस में मेक का कोई भी कॉजेटिव वर्ब है तो सीधा आँख मुनकर हमें वर्ब वन लगा देना है. ओके, नाउ मूव टू द सेकेंड वन. इन सेकेंड वी हैव टू हैव और गेट विदाउट एजेंट. ठीक है, एजेंट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी पर्सन के बारे में जाना रहा है तो एजेंट हुआ. अगर पर्सन नहीं है वहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सो उसे हम कहेंगे विदाउट एजेंट. ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि व्हेन हैव और गेट इज यूज्ड विदाउट एजेंट, इट मीन्स पर्सन डिनोटिंग वर्ड. पर्सन डिनोटिंग वर्ड अगर उसमें नहीं है तो उस टाइम पे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव और गेट जो भी हो सकता है सेंटेंस में, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, एजेंट नहीं रहेगा. तो यहाँ पे हमें वर्ब थ्री लगाना है. मेन हमें वर्ब का खेल रहता है कॉजेटिव वर्ब में. सो मेक वाले में वर्ब वन था और यहाँ पे अगर हैव और गेट के साथ में अगर एजेंट नहीं है, ये विदाउट एजेंट है, तो यहाँ पे हमें वर्ब थ्री लगाना होगा. जैसे कि एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं हम. इन द एग्जाम्पल्स वी हैव रजनी हैज़ हर बुक्स कवर्ड वेल. ओके, रजनी हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ हमारा कॉजेटिव वर्ब है, हर बुक्स क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एजेंट नहीं है. तो यहाँ पे अगर कवर वर्ब देगा तो इसका कौन सा फॉर्म हमें यूज करना है, यहाँ पे वर्ब थ्री इसका यूज होगा, कवर्ड. ओके, नाउ इन द सेकेंड वन वी हैव द मेन वर्ब एज बाथ. सो यू हैव टू यूज वर्ब थ्री ऑफ बाथ, दैट इज बाथ properly. Okay, now in third sentence we have
Shall as the main verb. Shall as the main verb. Ragini and Mohan are subject over here. Have is the causative verb. Here in the sentence here, second one, get is the causative verb. In the third, got or the get is the causative verb. So you have to just put verb 3 of the main verbs. In the third sentence we have shall as the main verb, so sold you have to put here. In the fourth one we have here iron, iron as the main verb, so iron as the main verb, so you have to put verb 3 of iron, that is ironed. Okay, you got your shirt ironed tightly. Your shirt is object over here, it is not agent, so the rule of have or get without agent should be used over here. Okay, so move to the third one. We have here with agent. If the causative verb have is provided with agent, then the structure will be like this: subject plus have plus agent plus verb 1. You have to just copy the structure of make over here. If have is provided with agent, then verb 1, like as before in the make causative verb, you have to put just verb 1. Like in the example, Ramila has her husband cook food. Cook is verb 1. Okay, now in the second sentence, I had my aunt. My aunt is agent over here, then her husband is also agent over here, so verb 1 is used here. Cook, sing, write, they all are verb 1 over here. So likewise the rule of make you have to apply just verb 1 over here. Okay, now in the fourth one, Rishikesh and Mohan have their cousin sister teach lessons. Teach is verb 1 over here. Rishikesh and Mohan are subject over here. Have is the causative verb. Their cousin is the object over here, the cousin sister, and teach is verb 1 over here. Okay, verb 1. You have to just put verb 1 over here. Okay, now the last one we have get with agent. If get is provided with agent, then 2 plus verb 1 is used. 2 plus verb 1 is used. Like in the first example, I got my mother. I is the subject over here. Got is the causative verb. My mother is agent. Then I have to just put here 2 plus verb 1. To massage. Okay, to bring. Okay, now in the third one, to cut. Okay, in the fourth one, to clean. So 2 plus verb 1 you have to use whenever the get is provided with agent. So by this we have ended up with the topic causative verb. Please let us if any queries you have. Support us with liking, subscribing and sharing our videos. Thank